Hello everyone, welcome to my YouTube channel AV Classes. Our today's topic is interference in thin film. See, thin film is a transparent medium having some refractive index, let's say mu, and have some thickness T. For interference to be occur, we need at least two rays to superimpose on each other. Okay, there are various methods from which we can obtain the interference pattern. For example, through the Young's double slit experiment. Another method is the interference through the thin film. Okay, let's suppose this is the diagram. When a light incident on a thin film, it get partially reflected, partially transmitted. Okay, and again it will get partially reflected and partially transmitted from the lower surface. See, for interference to be occur, either we need at least two reflected rays or two transmitted rays. From both conditions, we can obtain the interference pattern. Now, in this case, we have to find out the path difference introduced in this first reflected ray and the second reflected ray. There are two cases which we are going to discuss. One is for reflected rays and one is for emerging or transmitted rays. Okay. See, for reflected rays, the incident particle get partially reflected and partially transmitted. Now, this partially transmitted light again get reflected by the lower surface and again it will reflected from the upper surface. Okay. So, the path difference introduced here is path difference introduced here is what? This AB plus BC, ये जो है ट्रांसमिटेड लाइट है, AB और BC डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तब तक ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है E पॉइंट तक पहुंचा है. तो हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC किसमें? इन थिन फिल्म माइनस व्हाट? A. ओके, मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि कभी भी थिन फिल्म से आपको अगर एयर के लिए निकालना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा. सो म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी इन एयर, ये एयर के लिए माइनस ए. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस ए बी बी सी एंड ए. ओके, सी ए बी इज दिस वन. सो इन ट्रायंगल AOB, in triangle AOB, this is angle of refraction, this is thickness T. So apply cos R. Cos R is what? Base upon hypotenuse. OA is what? OA upon AB. OA is what? T and AB is AB. So this implies AB is what? T upon cos R. Now see, triangle APB and triangle PBC are congruent, due to which, because this 90, this 90, this is common, this is equal. So these two triangles are congruent, due to which this AB is equal to BC. So AB is equal to BC is equal to T upon cos R. Okay. Now in triangle APB, see, we have this angle and this is 90. So apply tan. Tan R is what? Tan R is what? AP. Tan R is what? AP upon what? BP. This implies AP is equal to BP is what? This is T. T into tan R. But this triangle ABP and PBC are congruent, due to which this AP is equal to PC. So this AP is equal to PC is equal to what? T into tan R. So we find the value of this AB, BC and this AC. AC is what? AC is what? AP plus PC means 2T into tan R. Now, in triangle AEC, here, in triangle AEC, okay, AEC में ये 90 डिग्री है और ये I है तो ये भी I होगा, ठीक है.
तो इसमें हम साइन रेशियो यूज कर सकते हैं. साइन आई इज व्हाट, ए अपॉन ए सी. सो ए इज व्हाट, ए सी साइन आई. ठीक है, और ए सी की वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 2t tan r into sin r. So we obtain all the values here. Let's put out one by one. Yeah, this is ABBC. See, path difference is what? Mu. AB is what? AB or BC. It is equal to 2 mu t upon cos r minus AE. A is what? This one, 2t tan r into sin I. Now हम एक काम यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो सारे जो रिलेशन है वो आर के टर्म में है, एक बस आई आ रहा है, आई को भी आर में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाउ? बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, म्यू इज व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर. सो साइन आई इज व्हाट, म्यू इनटू साइन आर. ओके, put the value here. So delta is what, 2 mu t upon cos r minus 2t. Sin r is what, sorry, tan r is what, sin r upon cos r into what, sin I is what, mu into sin r. If you take out common 2 mu t upon cos r from both terms, we get 2 mu t upon cos r, we get 1 minus sin square r. 1 minus sin square r is what, cos square r. 1 cos is cancelled out with this, so we get 2 mu t cos r. This is the path difference introduced in this thin film for the reflected light rays. But there is another thing which we have to note down here, is that for reflected rays there is a path difference, additional path difference of lambda by 2 is introduced in it. Okay, so the total path difference is what, this path difference plus the additional lambda by 2 is there. How this lambda by 2 is coming, I uploaded a short 2 days ago, just go and watch it out. Okay, so for reflected rays this lambda by 2 is there. Okay, now कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या यूज करते थे कि जो भाई जो पाथ डिफरेंस हो वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू. ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो इसके टर्म में आना चाहिए, एन माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा. ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव. और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा के बराबर होना चाहिए. देन वी हैव 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा. 2 म्यू टी cos r इज व्हाट, n minus 1 by 2 and another minus 1 by 2 into lambda. This is equal to minus 2 by 2 and minus 1 into lambda. Okay, so for constructive interference this is the condition which is similar for the dark fringe in the Young's double slit experiment, and this is the condition for dark fringe which is same for the bright fringe in the Young's double slit experiment. ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज के लिए हुआ. याद रखना सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज में ही एक फेज शिफ्ट आता है लैम्डा, सॉरी पाथ शिफ्ट आता है लैम्डा बाई 2 का. जो ये ट्रांसमिटेड लाइट है ना, इसके लिए भी पाथ डिफरेंस यही आएगा, ये वाला कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा. उस इस रिफ्लेक्टेड सॉरी इमर्जिंग रे में ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगी. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
ये किसके लिए था ये सारी चीजें? ये थी रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रेस, ये सिर्फ था रिफ्लेक्टेड रेस के लिए सारी कंडीशन। ट्रांसमिटेड के लिए हम बता दे रहे हैं, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रेस, ट्रांसमिटेड रेस के लिए जो पाथ रेफरेंस आया है 2 म्यू टी कॉस आर, वो सिर्फ एन लेमडा होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, और पाथ रेफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस आर जो होगा वो n-1/2 इंटू लेमडा डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये मैक्सिमा के लिए, ये आपका हो जाएगा मिनिमा के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट से जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, जिस पोजीशन पे मैक्सिमम मिल रहा है, वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगा, सॉरी मिनिमम मिलेगा, किसके लिए? इमर्जिंग रेस के लिए। सो दैट्स ऑल द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ओके, थैंक यू।